Why are we insecure? Let's try to understand कि हम insecure क्यों होते हैं. हम insecure multiple चीज़ों की वजह से होते हैं, but most importantly, I think what triggers us the most is comparing ourselves to other people. At least for me, that happens. And mostly it's triggered by social media and especially Instagram. We are always on Instagram these days, and जब भी हम Instagram खोलते हैं, हम किसी न किसी की story देखते हैं, किसी न किसी की life देखते हैं, and हमें लगता है कि oh wow, उनकी life कितनी अच्छी है, right? So I being a very conscious person, right? मैंने some time back I became a little more aware about what I'm feeding in my mind and what is going on. Me being very aware, मेरे साथ भी ऐसा होता है. If I am scrolling Instagram for a very long time, जबकि I always preach about being conscious, being in the present, being aware, being grateful. I preach all these things, but still होता है. And मैं भी जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वाह, I also want to take a vacation, or if some small things, like if someone is eating pizza right now and आपने शायद रोटी और लौकी की सब्जी खाई है, तो आपके दिमाग में instant comparison आता है कि oh wow, they had such a nice dinner and I just had लौकी की सब्जी. So this is basically how you get into that loop of comparing yourself with others. And जब आप ये constantly करते हो ना, तो क्या होता है कि आप एक point के बाद थोड़े insecure हो जाते हो. आपको लगता है कि बाकी सबकी life अच्छी चल रही है, मेरी life उतनी अच्छी नहीं चल रही है. You stop feeling confident, you stop feeling happy in your life in general, and आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, right? And now we'll dive into the 5 things that I want to talk about on how you can stop being insecure. Insecurity को stop करना एक constant process है. So the 5 things that I'm going to talk about are also continuous things. It's not a one-time thing. You have to incorporate these things in your life. मैंने किया है and it has helped me a lot, and that's why I wanted to share it with you all today. So let's get started. Number 1 is become aware of your insecurities. आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि what makes you insecure. आपके बारे में वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप insecure होते हो. So हम सबके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हम under confident feel करते हैं या insecure feel करते हैं. For example me, I have talked about it in my previous videos, but I'll say it again. When I went to boarding school, मैं 10 साल की थी तब मैं boarding school गई थी, and my boarding school was in Darjeeling, and वहाँ पे सब लोग English में बात करते थे. Everybody used to speak such polished English. I'm from Bihar, so I went there when I was 10 years old, and the environment shift that I saw there was for a 10-year-old, it was too much. And for me, that was the point. I think I became very, very insecure for some time. मैंने बात ही बहुत कम किया जब तक I couldn't learn English and learn to speak in English. तब तक मैं बहुत ही कम बोलती थी and बस manageable चीजें बोलती थी. But once I learned, then I started speaking, and then gradually, as you can see, I have become fluent in English now. But point is कि हर किसी इंसान के लाइफ में ऐसी कोई चीज होती है. उस टाइम पे मेरी लाइफ में English speaking was something that I was insecure about. बहुत लोगों के लिए उनका body fat उनके लिए insecurity create करता है. Some people are too thin and that makes them insecure. Some people have a fat face and that makes them insecure. Some people have certain body feature जिसकी वजह से वो insecure होते हैं. तो ये physical body aspect भी हो सकता है, and mental aspect भी हो सकता है, and personality aspect भी हो सकता है. That you have to identify कि किस circle में, किस situation में, किस circumstance में, and आपके अंदर वो क्या चीज है जो आपके लिए insecurity create करता है. What actually makes you insecure? Is it public speaking? Is it speaking in English? Is it your body? Some aspect of your body? वो identify करना बहुत important है. The first step is to identify that. Now, once you have identified it, write it down. Writing is very, very important, and मैं हर वीडियो में preach करती हूँ about journaling, about writing things down. So do that, write it down, whatever you figured out. 5 चीजें हैं, 10 चीजें, सब लिखो, but लिखो. Number 2, change your perspective. Now that you have identified कि आप क्यों insecure हो, the second biggest task is आपको अपना perspective change करना है. Now how will you change your perspective? What you have to do is आपको decide करना है कि आज से मैं अपने आप को prioritize करूंगा या करूंगी, and आज से I will change my perspective, and मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोलूंगी, and मैं अपने आप को ज्यादा प्यार दूंगी आज से, and मैं अपने आप को ज्यादा importance and value दूंगा आज से. And you have to believe that you want to change, and once you have decided that, it really helps you, because आपका एक perspective change हो जाता है from a negative mindset to a positive mindset. जो आप negative एक वो loop में फंसे होते हो, and then you decide कि नहीं, from tomorrow onwards
words. I am not going to tell myself that I am this and I'm that. I have, I'm fat, I'm ugly, I am this. You have to tell yourself that I love myself. So you have to change your perspective from that hate mentality or dislike mentality to love mentality. Start loving your body, start loving yourself as you are. ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है, सीख लेंगे. ठीक है, we are fat. ठीक है, we'll work out, we'll be healthy. If you have a lot of acne and you want to fix that makes you insecure. तो आप आज से डिसाइड करो कि I will fix my diet and I will start taking care of my skin. So you have to change your perspective, from cursing yourself, thinking all these negative things to thinking things like I love myself and that is why I will work on myself and I will fix myself. Number 3, stop comparing yourself with other people. जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि सबसे बड़ी चीज जो हमें इनसिक्योर करती है वो है कंपैरिजन, comparing ourselves with others, and social media plays a very very big role in it and we can't do anything about it because it is a part of our lives now, so we cannot help it. All we can do is try to cope with it, try to coexist with social media and find a balance कि social media के होते हुए भी हम अपने आप को कैसा रखेंगे so that social media का influence हम पे इतना ना आए कि हम पागल हो जाए या हम इनसिक्योर हो जाए या हम ऐसा सोचने लगे. So you have to learn to cope and coexist with the social media or with everything that's around you. You have to evolve like that. It's not like कि हाँ 10 reels देख ली, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, people are having amazing relationships और मैं यहाँ पे सिंगल बैठा हूँ या यहाँ पे मैं मेरा just breakup हो गया. So these things make you insecure, but that's all right. That's what I'm trying to tell you. You have to stop comparing yourself with others. Now how to do that? Comparison को overcome करने के लिए 2 चीजें कर सकते हैं. पहली चीज है to realize that all of us are not in competition with each other. जब आप ये समझ जाओगे ना कि everybody has their own path, like सबका एक defined path है and they walk on that particular path. The moment you realize that सबकी life की journey अलग है and अगर किसी और के life में अच्छा हो रहा है, that doesn't dim your light. Like you still have a chance to make it. So this is not relative marking नहीं चल रही है यहाँ पे कि किसी और को ज्यादा परसेंटेज आ गया तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा. आप उनके साथ साथ रहते हुए भी आप भी एक्सेल कर सकते हो. Now the second thing that I want to say is कि किसी और ने अगर कुछ किया है ना अपने लाइफ में, तो instead of being jealous or thinking of them as your competition, start taking inspiration from people. Like follow like-minded people. अगर आपका जो भी है, for example मेरा जो मैं mindset and motivation lifestyle का जो मेरा niche है, मैं Instagram पे अब बस वैसे ही लोगों को फॉलो करती हूँ. Like I follow all those people that I look up to or people who have really succeeded in the field that I want to succeed in. I don't follow fashion influencers. I don't follow celebs also because they're not adding anything to me. In fact मैं उनको देखूंगी तो मेरा बस टाइम जाता है. Right? It's interesting to watch them, so it wastes my time. I shouldn't say it, or I don't know if I should say it or not say it, but basically following people जिनसे मुझे कुछ value add मिल रहा है या जिनको देख के मैं look up to कर सकती हूँ, मैं उनको follow करना prefer करती हूँ. या फिर जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, like knowledge wise, जो मेरे डोमेन का नॉलेज है वो जो मुझे देता है. जैसे मेरे को साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, सो पीपल हु टॉक अबाउट साइकोलॉजी मैं उनको फॉलो करती हूँ. मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग एट कि कौन सा बुक अभी मैं पढ़ सकती हूँ जिससे कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में नॉलेज मिल सकती है, या कौन सा सेल्फ हेल्प बुक अभी बहुत नया आया है एंड बहुत अच्छा है एंड आई मस्ट रीड इट. तो मैं बुक रीडिंग क्लब्स फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे. सो यू कैन फॉलो थिंग्स दैट अलाइन विथ यू. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ एवरीवन एज योर कॉम्पिटिशन, learn from them and think कि if they could make it in their life, then even you have a chance. In fact, उन्होंने आपका एक road map define कर दिया है and they have also made it easier for you to succeed because they have shown, they have proven, they have done the hard work to show you that okay, इस genre में, इस niche में भी success मिल सकता है and मुझे मिल गया तो तुम्हें भी मिल सकता है. Right? So basically, if we start thinking of them as an inspiration rather than being jealous of them, it would be great. Now the third thing is reprogram your mind. Mind reprogramming इतना easy नहीं है, but small steps that you have to do is, constantly listen to affirmations. So मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह I listen to morning affirmations, Spotify, YouTube, हर जगह अगर आप affirmations करके सर्च करोगे तो बहुत सारे affirmations आएंगे. Positive affirmations आजकल अलग अलग थीम पे आते हैं कि करियर के लिए positive affirmations, life
लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए. सो आप वो सब सर्च करके, इफ यू कांट थिंक इट योरसेल्फ, लिसन टू देम. यू नो, बाकी आप जो अपनी लाइफ की मंडेन एक्टिविटीज कर रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, इवन नहा रहे हो, उस टाइम पे भी आप सुन सकते हो, सो दैट यू फीड गुड थिंग्स इन योर माइंड. एंड जब आप अच्छी चीजें फीड करते हो अपने माइंड में, तो आपका माइंड ग्रेजुअली रीप्रोग्राम होने लग जाता है. एंड वंस योर माइंड इज रीप्रोग्राम्ड, नथिंग कैन स्टॉप यू एंड योर इनसिक्योरिटी स्टार्ट्स टू फेड अवे. ट्रस्ट मी, दैट हैज हैपेंड विद मी एंड इट वर्क्स, बट इट टेक्स टाइम. ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट पे जैसा मैंने बताया था कि आप सारी इनसिक्योरिटीज को लिखो, क्या चीजें जो आपको इनसिक्योर करती हैं, एंड वंस यू ओवरकम इट, स्टार्ट क्रॉसिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेज फियर है, तो आप ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू गो ऑन अ स्टेज समडे एंड इट विल मेक यू फील सो गुड. एंड वंस यू हैव डन इट, क्रॉस इट. अगर आपको स्ट्रेंजर्स से बात करने में डर लगता है, लाइक यू आर इनसिक्योर, आपको लगता है लोग वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, पुश योरसेल्फ एंड ट्राई गो एंड टॉक टू अ स्ट्रेंजर. एंड वंस यू हैव डन दैट, क्रॉस दैट आउट ऑफ द लिस्ट. Once you cross these things, now it'll give you so much satisfaction that okay, I am cutting off the things, or I'm removing things from my life which make me insecure. I'm moving a step closer to a positive person, and I'm moving a step away from that insecure person that I used to be. Fifth and the last one is stay aware. Now, like I hinted about it initially in the video, कि you have to always stay aware कि आप क्या सोच रहे हो. जैसे when you're bathing, a lot of thoughts come in your mind. When you're brushing, सुबह सुबह बहुत सारे thoughts आते हैं. कभी कभी आता है कि अरे कल रात में मैंने क्या बोल दिया उसको, I didn't like it, या उसने मुझे क्यों बोला ऐसा. बहुत सारे thoughts आते हैं. उस टाइम पे you have to catch yourself. जैसे ही आपकी thought negative जा रही है कि अरे I am so stupid, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, catch yourself that time and you stop yourself and say that no, I am not stupid, I am a very smart person, I am very intelligent. जो मैंने बोला वो कुछ सोच समझ के बोला था, and maybe the situation was such and such. Just convince yourself. जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, just try to change it into a positive statement for yourself. So that was all that I wanted to discuss in today's episode. I hope it helped you. I hope you liked it. If you want to listen to only the audio version of this podcast, you can tune into any podcast streaming platform like Spotify, Google Podcast, Amazon, and you can search my name, that is Shreyashi Jha, and you will find my podcast there. Also, if you are listening to me on a podcast, please make sure you follow and also rate me on that particular podcast, because that really helps me grow my podcast. Also, if you have not subscribed to my channel yet, please make sure you do, and while subscribing, please do not forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. And I will see you again very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.